ओके, सो व्हाट हैपेंड बेसिकली, महाकाली का हम तीन चीज बहुत सामने से देखते हैं. वन इज हर दैट रूप which is like compassionate as well as the fears. The second thing is that her खड़ग जो वो कैरी करती है like a weapon. एंड थर्ड इज वो शिवा के ऊपर खड़ी रहती है. ठीक है. सो इस चीज को लेके लोगों के पास मुंडमाला भी होता है डेफिनेटली, या सो बेसिकली हम उसको गार्लैंड ऑफ लिबरेशन बोलते हैं. मुंडमाला जो वो पहनती है, वाई? बिकॉज मुंडमाला, हर ईच हेड रिप्रेजेंट्स द डिफीटेड ईगो, अ साइलेंस्ड डाउट एंड अ ट्रांसफॉर्म्ड मेमोरी. सो बेसिकली इस तरीके से सारे एक एक गार्लैंड के एक एक हेड को अलग अलग तरीके से लिया गया है. एंड जैसे कि सपोज वो हमें क्या टीच करते हैं, महाकाली हमें टीच करना चाहती है दैट द ट्रू फ्रीडम कम्स व्हेन वी लुक स्क्वायरली एट आवर डार्केस्ट सेल्व्स. जब तक हम हमारे सबसे डार्केस्ट फॉर्म में नहीं पहुंचते तब तक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता. And second thing is that the khadag, which I mentioned, that is the sword of true vision. Why? Because it's a illusions of fall away. खड़ग किस तरीके से काम करता है, लाइक इट्स अ कटिंग एज forged from the cosmic truth. It's like a truth, sword of truth, true vision. And महादेव की अगर बात करो कि standing over महादेव, that is the dance of creation and the destruction. Mahadev is a pure being. He is stillness. एंड वहां पे मूवमेंट कौन है? महाकाली, है ना. सो दैट इज द रीजन महाकाली इज लाइक मोर ऑफ क्रिएशन बिकॉज शी इज अ मदर, एंड डिस्ट्रक्शन इज महादेव. सो बेसिकली क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन आर इनसेपरेबल. ये हमें ये दिखाता है जब हम महाकाली की मूर्ति देखते हैं, तो हमें ये दिखाता है. बहुत सारे लोग महाकाली को लेके थोड़ा सा उनके दिमाग में डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि उनका फॉर्म बहुत फियर्स है, लोगों को डर लगता है. एंड बहुत सारे मिथ भी अवेलेबल है मार्केट में, दैट इज महाकाली इज मोर रिलेटेड टू द ब्लैक मैजिक एंड ऑल. नो, शी इज नॉट रिलेटेड टू द ब्लैक मैजिक, शी इज मोर इन टू द तंत्र. तंत्र इज नॉट ब्लैक मैजिक. तो ये एक बहुत बड़ा मिथ मार्केट में चलता है. इसके वजह से भी महाकाली को लोग इन अ डिफरेंट फॉर्म लेते हैं. बट महाकाली की एनर्जी जितनी ही फियर्सफुल है उतनी ही कामिंग एनर्जी है. इट ऑलवेज डिपेंड्स कि आप उस एनर्जी को अपने पास किस तरीके से बुलाना चाहते हो, बीइंग अ मदर और बीइंग समथिंग एल्स. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट वी आर गोइंग टू डू अ वेरी स्मॉल मेडिटेशन टुडे. ठीक है. आई एम गोइंग टू टेक 10 to 15 minutes फॉर दिस मेडिटेशन. ठीक है. आप जहां पे भी कंफर्टेबल हो वहां आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ. ठीक है. एंड कीप योर वाटर बॉटल हैंडी. थोड़ा सा अगर एनर्जी में कुछ अनइजीनेस फील हो तो घबराना नहीं है, दैट्स अ वेरी पार्ट ऑफ दैट मेडिटेशन. आपको ग्राउंडिंग के लिए आई विल सजेस्ट यू मेनी थिंग्स. आफ्टर दिस मेडिटेशन मेक श्योर कि आप आज और कल नेक्स्ट 48 आवर्स तक यू विल हैव लॉट ऑफ वाटर इनटेक. आप अच्छे से रखना, बिकॉज जब आपके बॉडी में किसी भी तरीके की एनर्जी आती है या एनर्जी आप उसको फील करते हो, तो उसका ग्राउंडिंग होना, उसका फ्लो में रहना बहुत जरूरी है. अदरवाइज दैट विल स्टक समवेयर एंड इट विल स्टार्ट पेनिंग समवेयर. होता है जब हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का इमोशन हो, किसी भी तरीके की फीलिंग्स हो, जब स्टक होती है तो हमारी बॉडी के उस एरिया में पेन होता है. ठीक है. तो आपको इस बात पे बिल्कुल ध्यान मत देना कि होगा और समथिंग लाइक दैट. बट आपको बस दो तीन चीजें मेंटेन करना है. अगर आपको बिल्कुल लग रहा है दैट कान गर्म हो रहे हैं और समथिंग लाइक दैट, जस्ट वॉक बेयर फुट. चप्पल उतार दीजिए, वॉक बेयर फुट. ठीक है. ठीक है. सो नाउ वी विल स्टार्ट. ओके. एंड हम कैमरा ऑन ही रखेंगे सो दैट आई कैन मॉनिटर इज एनीथिंग समथिंग इज गोइंग ऑन और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. यस, अगर किसी को कहीं पे आराम से बैठना है सो दे कैन प्लीज सेटल डाउन हो जाओ. आप पानी वानी सामने रख लो अपने.
ओके, मैं बाकी लोगों को दोनों को म्यूट पे डाल रही हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है। सो फर्स्ट, sit tall but relaxed. Gently close your eyes. Okay. Start breathing. Take deep breath. Slowly exhale on a count of four. It's one, two, three, and four. Hold for a moment on a count of four. One, two, three, and four. Now we will exhale on a count of four again. It's one, two, three, and four. Just feel your body that you are settled in. Feel the earth beneath you and supporting with the Divine Mother. Sit in a very comfortable position and posture. Keep your spine tall and relaxed. Now gently bring your attention to your breath. Inhale the peace and exhale the tension. Visualize a soft, dark blue light begin to form around you that is gentle, protective, and deep. This is the womb. This is the womb of the cosmos. You are at that space right now where trauma dissolves and rebirth begins. Now, we are going to call the fiercest but the most compassionate form of the divine feminine, the mother of time. Mahakal is a father of us, and she is Mahakali. She is the destroyer of ego. She is the liberator of pain. Now repeat silently or loud whatever you are feeling comfortable. I'm going to chant the Mahakali mantra and you are going to do the same with me. I'm going to start it. Om Krim Kalikayai Namaha. Om Krim Kalikayai Namaha. Om Krim Kalikayai Namaha. With every chant, feel the Mahakali's energy growing stronger around you. Her presence is intense, yet it brings safety. Her eyes burn through illusion. Her tongue devours your fears. Her dance shakes away all that does not serve you anymore. Just let go every bit of pain and every bit of trauma you're feeling. Let yourself be held in her fire. Now, slowly bring your attention to your body. Scan from the top of your head and down to your forehead. Now, straight away, go and focus on your feet. Slowly come to the toes, then the calf muscles, then the knees, the thighs, the lower belly, the upper belly, your heart, your throat, your jaws, your eyes, your neck, your shoulder. Where are your pain that you are holding in? Just imagine that place. Where are you holding tension right now? Name that emotion. Remember that naming your emotion is the most important part of transformation. It can be grief, it can be anger, a betrayal, a shame, an irritation. It could be anything. Name it.
and breathe into that space. With every inhale, allow Mahakali's energy to enter that area and allow the pain to dissolve into her fire. Visualize her black flame moving through your spine, burning the debris, burning the memories which no longer serves you, and burn the energetic cords that keep you stuck over there. Let her do the work. You don't have to resist it anymore. Now, bring into your mind that memory or a trauma that still weighs on your heart. See it very clearly. Do not fear. Face it without fear because the Mahakali is here to hold you. Imagine that memory as a black stone. It's heavy, it's cold, sitting on your chest. Now visualize that Mahakali standing before you, her hair wild, her eyes glowing with red and divine love for you, her sword gleaming with truth. She gently reaches to your chest and lifts that black stone out of your heart. She places it inside her mouth and devouring it completely. She looks at you. She puts her hand over your chest and whispers, "You are safe. You are not your pain. You are not your past. You are reborn now. And each scar is now sacred." Repeat after her that I release the pain. I reclaim my power. Repeat it with her that I release the pain. I reclaim my power. I release the pain and I reclaim my power. Now imagine a radiant indigo and golden light filling your heart. This energy is your new energy. You are healing. You are whole. Feel the vibrations purifying your energy field, dissolving any last bits of traumas or of residue. You are not broken. Remember, you are a sacred storm. You are becoming the light again. Now, gently bring your awareness to the back of your body, wherever you are feeling any kind of pain, like your wings part or your lower back or your upper back. Now imagine that every pain from your back is now gone. Mahakali is taking away all the pain, all those memories which are not serving you anymore. She cuts all the cords and come back to your body again. Feel the weight of your arms and legs, your head, your eyes, your mouth, your heart. Visualize a deep light that is the color of red pouring from the base of your spine. This is your root chakra base that is going into the earth. Mahakali is saying that you are connected. You are grounded into your truth. You are rooted. Place your hands over your heart and say silently or loudly,
that thank you, Mahakali, for burning away what no longer serves me. I walk forward with clarity, courage, and grace. I am free, I am fearless, I am divine. Repeat again that thank you, Mahakali, for burning away what no longer serves me. I walk forward with clarity, courage, and grace. I am free, I am fearless, and I am divine. When you are ready, and if you feel that you can now come back, take 2 deep breathe in and breathe out, and wiggle your fingers back to this moment, and gently open your eyes with a smile. Just relax and have a sip of water. All good? Anything you feel like कुछ uncomfortable तो नहीं feel हो रहा? Nothing. So, like, अगर कुछ ऐसा लग रहा है that you are feeling anything uncomfortable, that क्योंकि energy है, it happen कि sometimes होता है जब काम करना start करता है, it happen. So you don't have to worry. Just take more water, as many as water you can have. Just have it. And if you feel like after this, I don't want to talk anymore much of it. So I would like to say that, इस एनर्जी में सोक करो और इसको थोड़ा फील करो. And next weekend again we are going to do this, but that time I'm going to do a separate Mahakali healing thing. This is something different. That day जो next day होगा वो कुछ अलग होगा. So let's not talk anymore. Just go and relax. Try to walk barefoot for a while so that you can be grounded more easily. ठीक है, अभी आप लोग ट्राई करो कि स्लीपर्स पहन के घर पे ना घूमो फॉर अ वाइल. ठीक है, एंड हैव अ लॉट ऑफ वाटर. ठीक है, देन वी कैन मीट नेक्स्ट वीक. ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय.